Hello guys, welcome to you all. Hope you are all doing well. My name is Chetan Sharma and you are watching the Fit Things channel. In this channel you will find the queries related to the education, fitness and the facts in whatever the field. Examinations, basically competitive examination like IBPS and except civil services. As myself has cleared so many examination and I am currently working into the United India Insurance Company Limited. So from my preparation phase and that experience, I can help you and I can share you what things do you need to crack these examination in particular a span of time. So this is my first video. In this video, I'm gonna share you what was my strategy to crack these examination into 4 to 6 months while being into a full-time job. So let's start. Next, overall strategy. Yes guys, first and the foremost things like quit social media. Yes, that was my first step when I started preparing. What was happening, like I was working into the HCL technology and they were so various friend circle of mine, like they were used to enjoy their lives and posting their happy pictures. And क्या होता है कि हम लोग हैप्पी पिक्चर्स देख के उनको हम लोग ये समझते हैं यार हम लोग जस्ट हम एक रूम में बैठ के स्टडी कर रहे हैं एंड दे आर ऑल एन्जॉइंग देयर लाइव्स एंड पुटिंग दैट पिक्चर्स एंड ऑल दीज थिंग्स एंड यू वॉन्ट इवन नोटिस कि आपका 4 या 5 घंटा कब चला गया. एंड दैट 4 and 5 hour 5 to 6 hours study is more than enough for your particularly getting through these examinations. But you have to be focused. Believe me guys, like सब लोग कहते हैं मुझे पता है कि meditation करो. Other thing is the meditation. I forgot to mention that point in that particular strategy point. Meditation which helped me in various ways, specifically reasoning. एंड रीजनिंग में क्या होता है, आपको माइंड का कॉग्निशन कैपेबिलिटी आपकी बहुत होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए. लाइक एंड इफ़ यू वांट टू क्रैक द बैंक एग्जामिनेशन यू हैव टू लव द रीजनिंग, यू हैव टू लव द पजल्स. इन द पजल्स मेडिटेशन विल कम यू वेरी हैंडी. लाइक आपके माइंड में चैटरिंग चल रही है और अगर आप पजल्स कर रहे हैं आपके माइंड में चैटरिंग कर रही है, वॉट एवर द हाउ एवर प्रैक्टिस यू हैव डन, यू विल नॉट गोना मेक इट दिस एग्जामिनेशन. सो बी अवे फ्रॉम द सोशल मीडिया. थोड़े टाइम की बात है यार. एंड अडेप्ट ए गुड लाइफ स्टाइल. लाइक you can adapt a hobby and you can adapt at least do 10 to 15 minute meditation. Meditation is not such a big thing. Just concentrate on your breaths and slowly you will become more concentrated. You will feel that your number will increase in mock test. I felt this. Third thing is like crave for ranking in mock text. Yes, feel the competition. यार आप लोगों को competition feel करना पड़ेगा. like यार ये मेरे से आगे कैसे आ गया. Like I'm working this hard and ये कैसे आ गया. and why I'm not getting the first rank. Initially आप लोग जब mocks start करेंगे तब नहीं आएगी. So don't get discouraged because mocks are just to show your performance currently, not in the examination. That day performance matters well. आप मॉक्स दीजिए. मॉक्स के लिए मैं अलग से एक रिव्यू करूँगा, अलग से एक वीडियो बनाऊँगा. मॉक्स में आप बेसिकली मैं रिकमेंड करूँगा ऑली बोर्ड एंड प्रैक्टिस मॉक. चीप भी है एंड दोनों में अलग अलग अपनी क्वालिटी है. सो आई विल एनालाइज दीज इन सेपरेट वीडियोज. आई एम नॉट मार्केटिंग दीज मॉक्स बट आई ऑलवेज प्रिफर दीज मॉक्स टू गेट थ्रू द एग्जामिनेशन एंड आई क्रैक्ड लाइक एवरी एग्जामिनेशन फ्रॉम दीज मॉक्स. एंड ऑली बोर्ड के मॉक्स में ये है कि मॉक्स ऑलवेज एग्जाम से थोड़ा सा टफ ही होगा. SBI तुम्हें शॉक दे सकता है बट अदर एग्जामिनेशंस फॉलोज द SBI. सो अगर आप ऑली बोर्ड के मॉक्स दे रहे हैं, अगर उसे आप एनालाइज कर रहे हैं, लाइक होता क्या है आप लाइक प्रीलिम्स का, लेट्स टॉक अबाउट द प्रीलिम्स. इफ़ यू आर गिविंग द प्रीलिम्स जस्ट स्टार्ट गिविंग द मॉक्स फ्रॉम टुडे इटसेल्फ. इफ़ यू आर प्रिपेयर्ड और नॉट प्रिपेयर्ड. अगर आप सोच रहे हैं कि मैं पहले मैथ्स का सिलेबस निपटा लूँ फ्रॉम आई एम टॉकिंग अबाउट द बिगिनर्स गाइज हु आर स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच. सो अगर आप सोच रहे हैं कि मैं पहले अपने सब्जेक्ट्स पूरे कर लूँ, सिलेबस पूरे कर लूँ एंड आफ्टर दैट आई स्टार्ट द मॉक, यू आर रॉन्ग. जस्ट स्टार्ट द मॉक. होगा क्या कि आप लाइक आप 30 एंड 35 एंड 30 क्वेश्चन अगर आप देंगे तो अगर आप डेली देखिए ना, अगर आप 30 दिन भी कंटिन्यू मॉक देते हैं तो आपके लाइक 1000 क्वेश्चन दी हुई रही है अगर आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर भी नहीं रहे हैं तो. सो मॉक्स वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मॉक्स दीजिए, आपका स्कोर आपको पता नहीं लगेगा कैसे इंप्रूव होने लगा धीरे धीरे. एंड आफ्टर द गिविंग मॉक्स इज नॉट ओनली द थिंग्स, जस्ट एनालाइज द वीक पॉइंट. what will happen now, at a time you will feel that you have reached the plateau, like your numbers are not increasing in the mocks. After that you just analyze your weakness, you just टेक दैट प्लेटू फर्स्ट. लाइक आपको प्लेटू लेना पड़ेगा कि आप उस थ्रेशोल्ड तक पहुंच गए, मेरे नंबर अभी इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, बट उसके लिए आपको पहले मॉक्स देने पड़ेंगे धीरे धीरे प्रोग्रेसिव ओवरलोड. लाइक जैसे धीरे धीरे आपको बढ़ाना पड़ेगा. लाइक तो आपको पता लगेगा कि मेरी गलती कहाँ है. अगर आप 1 आवर अगर आप मॉक दे रहे हैं तो 2-3 आवर्स आप उसको एनालाइज करने में लगाइए. अगर आप 35 क्वेश्चंस आपने अगर मॉक में करेंगे, आप लाइक आपने 25 क्वेश्चंस करे, 35 रह गए, 10 रह गए, उसमें से 25 क्वेश्चंस को आप देखिए, 10 क्वेश्चंस को आप दोबारा से लगाइए. आपकी प्रैक्टिस ऐसे ही हो जाएगी. वीक पॉइंट को एनालाइज करिए एंड
GA and time management. The bank exam is all about the time management. That mocks, what I'm talking about mocks is so much like that. You can practice that maths, quants, reasoning and English separately also, no problem. But GA, that time management, the what to choose and what not to choose, that is the most important thing into the bank examination, and that is nobody is gonna teach you. That you will grasp through only and only mocks. General awareness, we'll talk about the next slide. So and what I used to do in prelims or mains, like most of the students का confusion रहता है कि मैं prelims की तैयारी करूँ, mains की तैयारी करूँ. मैं basically what I used to prepare for the only mains. But how I used to do? There's nothing much, not so much difference in the prelims and mains. Prelims is in today's like after 2018, the prelims is all about that speed. Like cutoff is raising too much, and the paper is like comparatively paper is coming easy. Like so cutoff is so much increasing, like, especially in assistant papers. Like cutoff is so much high, like you can वहाँ थोड़ी भी गुंजाइश नहीं है, like एक गलती की गुंजाइश नहीं है. Like RBI assistant का पेपर, आप take the example of RBI assistant. Like if you are the cutoff is for general in Rajasthan, like Jaipur, like 92 or 93, I don't know. But if it is coming like that, like 2-3 questions wrong and you are out. You have no space for even a single mistake. So what I was telling, like prelims और mains में आपको maths, English and reasoning normally आपको prepare करनी है, whatever it is prelims or mains. You just start giving the mocks for prelims and just start giving the quizzes and whatever the topics you are selecting according to your weakness, you just work onto that. I will do a video onto the timetable, what was my timetable unto that time, how I conquered that mistakes. एंड मेंस के लिए आपको जनरल अवेयरनेस, बिलीव मी गाइस, लाइक लोग कह रहे हैं कि जनरल अवेयरनेस में कैप्सूल पढ़ लूँगा और ऐसे कर लूँगा वैसे कर लूँगा. नहीं होता है यार. जनरल अवेयरनेस आप करोगे कैप्सूल को, ठीक है, एक बार पढ़ने में तो आपके जाएगी नहीं दिमाग में. यू कैन नॉट रोट दिस कैप्सूल को, आप दैट जनरल अवेयरनेस को आप रट सकते ही नहीं हो. 1 या 2 दिन में आप सोचो मैं 1 दिन पहले कैप्सूल पढ़ लूँगा. बट अगर आप अभी से डेली से अगर आप सिर्फ जनरल अवेयरनेस, आई एम टॉकिंग अबाउट द करंट अफेयर ओनली, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल अवेयरनेस एंड ऑल दीज थिंग्स दैट कम्स इनटू द जनरल अवेयरनेस. आई विल टॉक अबाउट सेपरेटली फॉर दैट. बट स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर करंट अफेयर ओनली. एवरी सैटरडे आप उन्हें रिवाइज करें. 6 दिन का आप पढ़े, एवरी सैटरडे आप उन्हें रिवाइज करें. अगर आप जॉब के साथ कर रहे हैं तो आप 5-6 दिन आप डेली मॉक्स दें. एंड सुबह मॉक्स दें जॉब जाने से पहले. जॉब जाने के बाद में आप उसे मॉक्स को एनालाइज करें. एंड 6 और 7 डे, लाइक सैटरडे संडे मोस्ट ऑफ द जगह ऑफ होता है. देन आप पर्टिकुलरली जो भी वीक पॉइंट उनमें देखें उन पे आप क्विजेज लगाइए, उन पे आप क्वेश्चंस लगाइए. आपको टाइम एंड वर्क आपको कमजोर दिख रहा है, लाइक मेरा टाइम एंड वर्क बहुत वीक हुआ करता था, तो आई यूज्ड टू डू टाइम एंड वर्क like 500 question, 1000 questions on like 2 days, like 8 hours. So use that time in that things. And that basically I used to take the mocks for prelims and used to prepare that general awareness part simultaneously with the prelims mocks. But after giving the prelims, as soon as I started, I did not wait for the mains result, because I was always confident that prelims is not gonna be that much of tough for me. And पैटर्न मोस्टली फिक्स्ड ही आता है. लाइक प्रीलिम्स का पैटर्न मोस्टली फिक्स्ड आता है. लाइक आपको मैथ्स का पैटर्न फिक्स्ड होगा. 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगी, 2 या 3 ODIs देंगे, एंड फिर आपको सिंप्लीफिकेशन देंगे. सो एंड पैटर्न्स मोस्टली अगर चेंज करेगा, कोई शॉक देगा तो आपको SBI शॉक देगा. एंड आफ्टर दैट ऑल एग्जाम्स फॉलोज द SBI. सो प्रिपेयर लाइक यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द मेन्स. So let's talk about the maths strategy. Like first point, I agree that most of the people have talked about these. Learn at least tables till 30 and squares till 50 and cubes till 20. Yes, believe it or not, guys, like this will create a huge difference. I felt it. Usually I first ignored these things, like this is not gonna matter. I know the tables only till 25, and I thought that this is gonna okay and this is gonna fit. But gradually क्या हुआ 2018 के बाद में कट ऑफ बहुत हाई जाने लगी, एंड सिंगल सेकंड्स का मैटर करने लगा. लाइक पेपर प्रीलिम्स में पेपर बहुत कैलकुलेशन बेस्ड आने लगी. सो प्रीलिम्स निकालना इतना वो हो गया लोग बागों के लिए. सो ये जो थिंग है ना कि प्रीलिम्स में मैथ्स में बहुत काम आएगी, बहुत ज़्यादा. लाइक आपको पता नहीं लगेगा कि आप like whatever is used to, like 20 minutes का maths का टेस्ट आता है, and in this 35 questions, like first what I used to do initially, I attempted a DI for 5 to 7 minutes. I tried to attempt a DI into that 2 DIs into 5 to 7 minutes, but that can be possible if you learn these things. Like आपको पता नहीं लगेगा, but these things comes very handy. This will create a huge difference. You will knock out in prelims itself if you don't know to grab the speed. There's always a 2-3 sets of data interpretation, like you should hit them first, according to me. This is my strategy. One thing I want to say that, guys, like that particular strategy, that fancy strategy doesn't work for anyone. Like it cannot be happen like someone's strategy can work for me and my strategy can work for anyone else. But from this video, what I'm trying to tell you, like from my experience, from what I used to do, you can grasp it
things, you can grasp my experience, and you can hit according to yourself. You can improvise according to yourself. And remember that, guys, like if you are thinking like maths is gonna be easy, so hit them hard, like you try to get that 35 out of 35 numbers into that section, because one of the section always tough in this examination. There will be two sets of the DIs into the prelims examination. After that, there should be 5 sets of the quadratic equations. That is the proportion, like you cannot miss. You cannot miss these sections. Like you have to have the command of sections, like because that 10 questions will be remaining for that arithmetic. वो क्वेश्चंस आपका टाइम लेंगे, वो क्वेश्चंस 1 या 2 मिनट्स आराम से टाइम लेते हैं, बट दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ दैट इज नॉट दैट मच ऑफ लेवल, यू कैन इजीली क्रैक दीज इन 2 and 2.5 minutes, and after that you can have easily 10 or not 10 but 5 to 6 minutes you can easily have for that basically arithmetic questions, and you can give that time into that questions. So that was my strategy for the prelims. And after that mains, you all know that in that mains examinations they basically ask this in this pattern, but enlarged pattern. Like here they are asking 2 DI, they will ask like 3 or 4 DIs with a 1 or 2 sets with the complex DIs, like they will mix some arithmetic concept in this. Like nowadays they are asking according to the SBI in simple examination also, like they will mix profit and loss concepts. Like one of the DI concept, like they will ask some quantity based DI. They will try to complex the data according to the mains level. Quadratic equations will be there if the paper comes into the medium to intermediate level. So this will be the strategy for the maths. For data interpretation, like there are so many PDFs, and start from the scratch, like start from the solving 1 or 2, 3 PDFs, like simple 1 variables, and after that start to moving like complex PDF. Here I'm showing only the brief idea. मैं आपको यहाँ brief idea बता रहा हूँ. But to the next videos I will share the proper subject wise strategy. सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चंस श्योरली होंगे आपके प्रीलिम्स में, एंड इवन मेंस में भी सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चंस आ जाते हैं, बट दैट कॉम्प्लेक्सिटी लेवल्स एंड डिफिकल्टी लेवल्स में वेरी, एंड इफ द पेपर levels is onto the higher side, there may not be a simplification questions. There may comes like वो लोग complexity level कैसे बढ़ाते हैं, like किसी एग्जाम में अगर अर्थमेटिक क्वेश्चंस ज़्यादा आ गए, ऑब्वियसली complexity level बढ़ गया, क्योंकि and one thing always remember guys, like पेपर टफ आया तो सबके लिए टफ आया. What happens in SBI ना, I cracked 2 times SBI. What happens in SBI, like SBI always checks your caliber to choose the question and not to choose the questions. Like SBI always shocks the people. Into the first 10 minutes, most of the people lose their caliber to do the examination, and they lose their temper. They start to attempt randomly guesses, and at that time they lose the battle. That is the time you have to hold the breath. You should remember that the paper is tough for everyone, not for yourself only. So always remember that. For the arithmetic examination, you can take that quantum cat or whatever quant books. Like firstly, I started do from the RS Agrawal. I started doing that basic questions. After that, quantum cat LOD1 was more than enough, and the rest of the work will do your mocks. In which mocks, like if you will give the prelims and mains mocks ना 50 questions आते हैं यार mocks में, आपकी practice वैसे ही हो जाएगी. And what I used to do also, like if I'm feeling like my time and work is weak and my this thing is weak, in time and work also, like my volume related एक questions आता है time and work में, that question particularly ये question पे मैं particularly अटकता हूँ. तो that type of question I used to do from the quizzes, Bankers Adda, and I used to search into that particular examination websites. That was the concept I previously declared. Like for the arithmetic, take each time and work, time, speed, distance, and most of the topic, like whatever it is here, average, and take each question and do first 50 and 60 questions from the each topic, and start taking mocks. Rest of the things will get aligned after that itself only. Reasoning, that is the part that decide your success into each bank examinations. Like if you have to crack the bank examination, now you will have to learn this section, you have to love the puzzles is the most important thing in today's examinations, in today's IBPS examination. Even prelims examination, they are giving like 25 puzzles out of 35 questions. Like whatever the patterns I changed into in 2-3 years, like they are starting giving the puzzles, most of the puzzles. And first you have to for the secure side, you have to get the commands on to these questions. Inequalities, you will find the various PDFs on equalities and various tutorials onto the YouTube for these things. And direction sense, just get command of these questions, like that whatever the level of questions come into these particular varieties,
यू शुड बी एबल टू डू इट वट एवर द लेवल्स. लाइक डायरेक्शन सेंस में कई बार वो लेवल बहुत कॉम्प्लेक्स कर देते हैं, जैसे SBI करता है. ब्लड रिलेशन, सिलोसिस में नए नए पैटर्न आ रहे हैं, लाइक हर 2-3 ईयर्स में सिलोसिस में नए पैटर्न आ रहे हैं. 1 ईयर्स में आई थिंक सिलोसिस, रिवर्स सिलोसिस में नए पैटर्न आ रहे हैं. एंड पजल्स के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने आप को पजल से लव करना सीखिए. पजल्स में आप अपने आप को ये समझिए, यू आर ए शर्लॉक होम्स एंड यू हैव टू फाइंड दैट क्रिमिनल. लव लाइक यार ये मेरे से कैसे नहीं बन सकता, इसको तो मैं बनाऊंगा ही. बट डोंट लव द पजल्स इन एग्जामिनेशन. इफ़ यू आर स्टक ऑन दैट पजल, जस्ट लीव दैट. बिकॉज अगर आपके फर्स्ट 5 मिनट्स अगर आपके पजल में वेस्ट है एंड इफ़ यू आर नॉट एबल टू मेक इट, जस्ट फॉरगेट दैट एग्जाम्स. यू आर नॉट गोना मेक दैट एग्जाम. सो just love the puzzles for that reasoning, and just love the reasoning. For English like banks exam English and the SSC exam English is totally different. Like in SSC that grammatical and other parts is mostly dominating, but in bank exam English is mostly based on the reading and comprehensive based English. So basically the reading is the key. Read whatever you love to read, like that novels, that editorials, whatever it is, whatever it is, like watch English movies, watch English series, but in limit. What I used to do, I did not love reading, but I used to love that novels, like basically fiction novels. And after that I tried to read Hindu. I will also make the video like how to read Hindu. Like Hindu is very boring paper, even not a single picture of any girl there. And after that just read like 4 to 5. The more you read na, the more you will get that upper hand onto that English. जितना हो सके आप रीड करें, आपको पता भी नहीं लगेगा आपके मार्क्स कैसे इंक्रीज होने लगे इंग्लिश में. दैट हैपेंड विद मी. एंड इंग्लिश आपके इंटरव्यू में भी काम आएगी, बिकॉज इफ यू अनलेस यू आर नॉट गिविंग द RRB's इंटरव्यू, दैट होल कम्युनिकेशन विल बी इनटू द इंग्लिश ओनली. एंड फॉर द ग्रामर पार्ट, लाइक दैट एरर्स हर प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन का मोस्ट ऑफ द पार्ट होती है. लाइक चूज द एरर, लाइक एरर करेक्शन आता है. आजकल वो लोग फ्रेजल्स एंड गुड वॉकेब भी पूछने लगे हैं. लाइक बहुत ऑप्शन वॉकेब्स आजकल मुझसे भी नहीं निकल पा रही है. लाइक लास्ट एग्जाम मैंने दिया था NIACL 2019 का, मैंने इंटरव्यू दिया था. अच्छी वॉकेब वो पूछने लगे हैं. फ्रेजल वर्ब, SBI तो फ्रेजल वर्ब पूछने लगा है. सो विल हैव टू लाइक रिमेंबर दीज, आपको रटनी पड़ेगी. SP बख्शी एक अच्छी बुक है अगर आप ग्रामर के लिए प्रैक्टिस करना चाहते हैं. एरर करेक्शन में मैं आपको ये कह सकता हूँ कि जैसे एरर करेक्शन में भी बैंक्स में एक डिफरेंट टाइप ऑफ एरर आती हैं. लाइक मोस्ट ऑफ द एरर आई नोटिस दैट वर्ब एग्रीमेंट एरर, मोस्ट ऑफ द डोमिनेंट एरर्स एग्जाम बैंक एग्जामिनेशन. सो लाइक 100 और 150 एरर्स कर दो यार, लाइक वर्ब एग्रीमेंट्स पे. एंड there are some 100 golden rule of the grammars. I will share the PDF if you want. Please do comment regarding the video. If you want these things, I will surely provide a PDF. There's a particular pattern of the error also. I will tell you. You can easily, if 5 errors are coming, you can easily 2, 3 or 4 errors you can easily crack that. Mains में वो phrases and good vocab पूछ रहे हैं, वो आपको बनानी पड़ेंगी. Each year what I used to maintain a diary. मैं एक डायरी मेंटेन करता था. उसमें जो भी अच्छे वर्ड्स आते थे हिंदू से, शुरू में करता था, बाद में वो भी छूट गई. बट छूटी तब तक जब तक मेरी अच्छी कमांड हो चुकी थी इस पर. शुरू में सब कोई करता है, बट आपको करो, आपको बेनिफिट मिलेगा. क्योंकि यार बैंक का एग्जाम इज़ ऑल अबाउट द अपर हैंड. अगर आपका अपर हैंड नहीं है, पीछे रह जाओगे आप. फील द कंपटीशन यार, आपको कंपटीशन फील करना पड़ेगा. जो भी वर्ड्स हैं SP बख्शी में आप सारे रट लो. रटने का एक तरीका है, लाइक आप A से आपने सारे वर्ड्स स्टार्ट किए, लाइक आपने 50 वर्ड्स स्टार्ट किए. देन नेक्स्ट डे आपको 50 वर्ड्स और रिवीजन करने हैं, 50 वर्ड्स और साथ में नहीं पढ़ने. देन 100 वर्ड्स रिवीजन करने हैं, 50 एंड और पढ़ने. आपको डायरी मेंटेन करवाओ वर्ड्स की. एरर्स के बारे में बता ही चुका हूँ. सो इंग्लिश में आप बेसिकली आप जितना आप उसको रीड करोगे ना, आपको एक कंप्रेंशन अलग से आपके दिमाग में बैठेगा. लाइक इस सेंटेंस में कुछ एरर है. एंड इंग्लिश ऑफ द बैंक एग्जामिनेशन इज ऑल अबाउट कंप्रेंशन बेस्ड. द मोर यू विल रीड, मोर यू विल ग्रास्प द कमांड into that English section of particular bank examination. General awareness, this is the section mostly underrated into the bank examination. शुरू में मेरे को ये बहुत बोरिंग सेक्शन लगता था यार, बैंक रीजनिंग तो कर लेंगे, इसमें क्या है, इसको एंड में पढ़ लेंगे. बट प्रीलिम्स में आप निकाल जाओगे, मेंस में आपको 1 या 2 नंबर से धोखा देगा ये सेक्शन. This section will get you finally selected. This is the very good section and minimum effort, very cost benefit ratio. इसका cost benefit ratio बहुत अच्छा है. लाइक आप बहुत कम एफर्ट में बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं इसमें. बेसिकली ये सेक्शन 4 पार्ट कवर करता है. करंट अफेयर रिसेंट मंथ के, लाइक आई यूज टू डू फॉर 4 मंथ्स. स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके में क्या आता है, स्टैटिक जीके डिफरेंट टाइप की जीके आती है. लाइक बैंक में नॉट लाइक मुगल ताजमहल किसने बनाया, ये किसने बनाया, ऐसे सी टाइप की नहीं. लाइक जीके, स्टैटिक जीके, लाइक स्टैटिक जीके वही आती है जो रिसेंट करंट अफेयर्स में से उठाई गई होती है. लाइक राम मंदिर पे नरेंद्र मोदी अभी गए हुए हैं. एंड राम मंदिर कहाँ बन रहा है, उस जगह की कैपिटल पूछ लेंगे, उस जगह का गवर्नर पूछ लेंगे, उस जगह के फ्लोराज फोनाज पूछ लेंगे. दैट टाइप ऑफ स्ट्रेटेजी कम्स. But anyways, you will have to remember the all like states capital,
countries, currencies, and that floras, faunas, governors, and CM, prime minister. Like this will, अगर आप रटोगे तो याद नहीं होगी इसको, आप like हर सैटरडे संडे को देखो, हर सैटरडे संडे को आप रीड करो, जस्ट याद हो जाएगा. बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा. बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस रिसेंटली 1 or 2 ईयर्स में क्या हुआ है, लाइक 17 में जब मैंने पेपर दिया था एंड 19 के मैंने पेपर दिए, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस मोस्ट ऑफ द जनरल अवेयरनेस का पार्ट कवर करने लगी है. लाइक इस सेक्शन में मोस्टली वो क्वेश्चन पूछने लगे हैं. सो हाउ टू प्रिपेयर दीज सेक्शंस, लाइक वट एवर द न्यूज़ यू आर रीडिंग ना, लाइक बेसिक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस पर तो मैं एक वीडियो बना ही दूंगा. एंड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस करके एक अरिहंत की बुक आ रही है, बुक भी आती है 125 रुपीज़ की. बेसिक आइडिया लेने के लिए बहुत अच्छी बुक है. इकोनॉमिक्स में इसमें मेंशन करना भूल गया, इकोनॉमिक्स भी एक बहुत अच्छा पार्ट है, वो ये लोग बहुत पूछने लगे हैं आजकल. बेसिकली स्पेशलिस्ट जैसा पेपर आता है आजकल जीए का, तो इकोनॉमिक्स आपको पढ़ना पड़ेगा, जीडीपी, जीएनपी और वट एवर इट इज़. बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस में क्या पूछते हैं, लाइक वो भी जो ही करंट अफेयर्स में चल रही होगी ना, उसी से रिलेटेड वो चीज़ें पूछेंगे. लाइक आपने कोई न्यूज़ पढ़ी, लाइक बैंक ने रेपो रेट बढ़ा दी, या बैंक ने LAF किया, या जैसे अभी RBI ने लॉकडाउन के अकॉर्डिंग बहुत सारे मेजर्स किए, तो श्योरली उसमें से वो क्वेश्चन पूछेंगे. दैट स्कीम इज़ वॉट, दैट स्कीम इज़ वॉट. लाइक सुकन्या समृद्धि योजना में अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी, व्हाट इज द सुकन्या समृद्धि योजना, लाइक व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट फॉर दैट टाइप ऑफ स्टैटिक जीके आस्क्ड इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस. बेसिक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस स्टैटिक जीके आल्सो आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, लाइक कैपिटल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट. सो दिस इज अ टोटली होल डिफरेंट टॉपिक व्हिच कैन बी लर्नड बाय दैट various tutorials. Or if you want that separate tutorial for these things, you can tell me into the comment section. I will try to make a video on these sections. And for this section I will guarantee you, like if you will read from my videos, you will get surely clarity and what are the questions are gonna come from these topics that will be covered in that video totally. So each portion आपको GA में हिट करना पड़ेगा अगर आपको totally finally. So देखो, लोग बोलते हैं मैंने प्रीलिम्स निकाल लिया, मेंस निकाल लिया, दैट डजंट मैटर until and unless you don't have that call letter in your hand. I missed sometime 0.25 and 0.5 numbers, that because of that bitch general awareness. So guys, if you like my videos, please like and subscribe my channel for more videos.